Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. The first question is, a boy is wearing a shirt of mass 150 gram. ठीक है, एक लड़के ने 150 ग्राम की शर्ट जो है वो पहनी हुई है. हाउ मच फोर्स इज ही एक्सर्टिंग ऑन द ड्रेस? डू नॉट फॉरगेट टू स्टेट द डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है दैट हाउ मच फोर्स द बॉय इज एक्सर्टिंग ऑन द ड्रेस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, थर्ड लॉ हमारा स्टेट करता है कि ईच एक्शन हैज इट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑल्सो द फोर्स दैट एक्सर्ट one object on another has equal magnitude of force that another object exert on the first. यानी जितना शर्ट जो है फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉय के ऊपर, उतना ही बॉय जो है वो शर्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. लेट अस सी हियर द मास ऑफ शर्ट इज 150 ग्राम और इफ वी कन्वर्ट इट इनटू केजी. ठीक है, ग्राम को हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया है 0.15 केजी. देन force is equal to mass into acceleration due to gravity, because यहाँ पे जो है acceleration की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, acceleration due to gravity, क्योंकि जो शर्ट है वो ग्रेविटी में मास जो है उसका वो exert कर रहा है, फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है. ओके, the mass of shirt is 0.15 kg and it is multiplied by the value of small g, that is 10 meter per second square. So the force exerted by the boy on the dress is 1.5 Newton. It means that the force of 1.5 Newton he is exerting on the dress. ठीक है, अब वो लड़का जो है वो 1.5 न्यूटन का फोर्स जो है वो ड्रेस पे एक्सर्ट कर रहा है एंड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, बिकॉज वो जो शर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉय के ऊपर जो है उसका मास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, ईच एक्शन हैज इट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो शर्ट जो है वो उस बॉय के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो जो बॉय होगा, वो जो लड़का है, वो शर्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा. Question number 2 is, your physics book has mass of 400 gram. It is kept on a horizontal table. ठीक है, हमारी फिजिक्स बुक जो है वर्मा की है. It is of mass 400 gram. It is kept on a horizontal table. Taking small g is equal to 10 meter per second square. Find the force both magnitude and direction exerted by. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं. टेबल ऑन द फिजिक्स बुक. ठीक है, टेबल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा फिजिक्स बुक के ऊपर, फिर फिजिक्स बुक ऑन द टेबल. ठीक है, फिजिक्स बुक जो है वो कितना टेबल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. अर्थ ऑन द फिजिक्स बुक, अर्थ जो है वो फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फिजिक्स बुक ऑन द अर्थ. ठीक है, अब फिजिक्स बुक जो है वो अर्थ के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. लेट अस सी हियर. ओके, नॉर्मल फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हियर वी कैन सी दैट वी विल टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इनटू g. Okay, mass of the physics book is 0.4 kg. If we convert gram into kg, gram को हम लोग convert किए हैं kg में, तो 0.4 kg into 10 means the value of g is equal to 4 Newton. ठीक है, normal force जो physics book apply कर रही है that is 4 Newton. So book exert 4 Newton force on table. Same on the book due to the third law of motion. ठीक है, जितना बुक जो है टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, उतना ही जो है टेबल जो है बुक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ईच एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, as there is nothing given about the table, we take it negligible. So the force exerted by the book on earth is 4 Newton. ठीक है, टेबल के बारे में यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दैट फिजिक्स बुक ऑन टेबल will apply downward force and table on the physics book will apply upward force, and
फिजिक्स बुक ऑन टेबल विल अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। टेबल जो है वो फिजिक्स बुक के ऊपर जो है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो फिजिक्स बुक है वो टेबल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, अर्थ ऑन द टेबल, यहाँ पे हम लोग को टेबल के बारे में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग टेबल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो force exerted by book on earth is 4 newton, and same the force exerted by earth on book is also 4 newton, ठीक है, due to third law of motion. Now let us see the solution one by one. यहाँ पे 4 questions है, चारों questions को हम लोग उसके solutions को देखेंगे यहाँ पे। तो the first question क्या बोल रहा है हमारा कि टेबल जो है वो फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो टेबल जो है फिजिक्स बुक पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन है फिजिक्स बुक जो है वो टेबल पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज 4 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फिजिक्स बुक अर्थ के ऊपर कितना अप्लाई कर रहा है, दैट इज 4 न्यूटन अगेन, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ जो है फिजिक्स बुक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज 4 न्यूटन अगेन in upward direction. Question number 3 says that how much force is needed to produce an acceleration of 16 centimeter per second square in a body of mass 250 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है 250 ग्राम की, तो ये बोल रहा है कि कितना फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा। ओके, नाउ here acceleration is given 16 centimeter per second square. We will convert it into meter per second square by dividing it by 100. Okay, mass of the body is 250 gram. We will convert it into kg. ठीक है, SI यूनिट को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, so we will convert all the units in SI unit. That is 250 gram divided by 1000. Okay, we have the formula F is equal to mass into acceleration. So we will put these values. Mass की value है 250 divided by 1000, and हमारे acceleration है that is 16 by 100. Okay, after solving it, we get the force needed to produce an acceleration of 16 centimeter per second square is 0.04 Newton. Okay, the force needed is 0.04 Newton. Question number 4 is a force of 10 Newton act on a particle of mass 0.4 kg. ठीक है, फोर्स जो है वो 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है किसी मास ऑफ द बॉडी दैट इज 0.4 kg, उसकी मास है उस बॉडी की जिस पे हम लोग ने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर। फोर्स is equal to 10 Newton, here already given, and mass is 0.4 kg. We have to find out the acceleration using the relation F is equal to m into a mass into acceleration. So here we will put all the values, that is force is equal to 10 Newton, mass is equal to 0.4 kg. We will easily find out the acceleration of that body, that is 10 Newton divided by 0.4 kg, which is equal to 25 meter per second square. Thus, the acceleration produced by the particle is 25 meter per second square. Question number 5. A body of mass 1 kg is kept at rest. ठीक है, एक बॉडी है जिसकी मास 1 kg है और उसे हम लोगों ने रेस्ट पे रखा हुआ है। A constant force of 6 न्यूटन start acting on it. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स जो है उस पे 6 न्यूटन का फोर्स हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पे लगा रहे हैं। Find the time taken by the body to move through a distance of 12 meter. Okay, let us see the solution here. We know this expression F is equal to mass into acceleration. Force here given is 6 Newton and mass of the body is 1 kg. We will find out the acceleration of that body, that is 6 divided by 1, that is 6 meter per second square. Acceleration हम लोगों को यहाँ पे find out हो गया. Again we have the relation, that is third equation of motion, 2as is equal to uv square v square minus u square. ठीक है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है that is 2as is equal to v square minus u square. U here is 0 because the body is at rest. ठीक है, बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, तो u मेरा कितना हो गया यहाँ पे 0, and the displacement done by the body is 12 meter. S, the value of S is 12 meter. We will put all these value in this equation.
ठीक है। 2 into 6, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, into 12 which is equal to v square minus 0 square because body is at rest, so the initial velocity will be 0. ठीक है, v square is equal to 12 into 12 that is 144. so we will इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया, that is 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ओके, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी। वी नो द वैल्यू ऑफ v, that is 12 meter per second. We know the value of u, that is 0 meter per second because the body is at rest. And a, that is 6 meter per second. यहाँ हम लोगों ने a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, that is 6 meter per second square. Okay, now we will substitute these values in this equation. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने इन सारे वैल्यूज को पुट करना है और फिर उसके बाद हम लोगों को t की वैल्यू, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, 12 दैट इज फाइनल वेलोसिटी। इस इक्वेशन में हम लोगों ने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। 12 दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u इज 0 प्लस 6t, 6 is acceleration, 6 meter per second square, and t we have to find out. ठीक है, तो 12 by 6, the time taken by the body to move through a distance of 12 meter is 2 seconds. ठीक है, 2 सेकेंड में वो बॉडी जो है वो 12 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। Therefore, it took 2 seconds to cover the distance of 12 meter. Let us see the question number 6. The velocity of a particle of mass 150 gram changes from 8 meter per second to 12 meter per second. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है जिसकी मास 150 ग्राम है। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास जो है वो 150 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से चेंज करके हम लोगों ने उसे उसकी वेलोसिटी को चेंज किया है 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ओके, इन 2 सेकेंड्स, टाइम कितना लगा 8 से 12 होने में, दैट इज 2 seconds. Assuming that a constant force act on it, find the magnitude of force. Now we have to find out the magnitude of force, that is mass of the particle. We will convert it into gram, we will convert it into kg. Okay, ग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोग इसको kg में कन्वर्ट करेंगे by dividing it with 1000. ठीक है, we get mass of the particle is 3 by 20 kg. Initial velocity was 8 meter per second and final velocity is 12 meter per second. Okay, and the time taken by that particle to change these velocity is 2 seconds. ठीक है, 2 सेकंड में इसकी velocity 8 meter per second से 12 meter per second हो गई। Okay, now using first equation of motion, that is a is equal to v minus u by t, we will find out the acceleration of the body. ठीक है, v is 12 minus 8 divided by 2 which is equal to 4 by 2 and we get the acceleration of the body 2 meter per second square. Hence, F is equal to mass into acceleration. ठीक है, mass of the body is 3 by 20 into 2 meter per second square. We get 0.3 Newton force. ठीक है, तो हम लोगों को उस पार्टिकल जो है वो कितना फोर्स अप्लाई एक्सर्ट कर रही है, दैट इज 0.3 न्यूटन. Okay, thus the magnitude of force acting on the particle is 0.3 Newton. Let us see question number 7. A force of 4 Newton act on a body of mass 2.0 kg of for 4 seconds. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, एक बॉडी है जिसका जो मास है दैट इज 2.0 kg. ठीक है, इस बॉडी की जो मास है दैट इज 2.0 kg एंड अ फोर्स ऑफ 4.0 न्यूटन. ठीक है, इस बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया 4.0 न्यूटन. 4.0 न्यूटन मींस 4 न्यूटन फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया फॉर 4 सेकेंड्स. ठीक है, 4 सेकेंड के लिए हम लोगों ने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया. अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी, हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन का
4 सेकेंड्स तक, इट्स वेलोसिटी व्हेन फोर्स एक्टिंग, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 4 न्यूटन, मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, okay, acceleration will be force by mass means 4 by 2, that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम लोगों ने 4 न्यूटन की फोर्स इस पे अप्लाई किया तो ये बॉडी जो है एक्सेलरेट की विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Initially it was at rest, so its initial velocity will be 0 meter per second. So T1 means first time जब हम लोगों ने 4 सेकेंड के लिए उस 4 न्यूटन को अप्लाई किया फोर्स, तो उस वक्त जो है वो T1 लेट इट बी T1, तो T1 is equal to 4 सेकेंड। Using first equation of motion, V is equal to U plus AT. U means initial velocity of that body was 0 meter per second plus A, that acceleration यहाँ पे हम लोगों ने find out किया, acceleration of that body, that is 2 into time 4 seconds, so the velocity of the body is 8 meter per second, ठीक है। पहले 4 सेकंड में जो बॉडी एक्सेलरेट की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो थी वो 8 मीटर पर सेकंड की थी। Distance traveled by the body is, we will find out by the second equation of motion, ठीक है। तो u और t यहाँ पे u was 0, तो यहाँ पे ये टोटल ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। सो s1 दैट इज फर्स्ट टाइम में ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज s1 1 by 2 at स्क्वायर, a is 2, t is फॉर टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए वो बॉडी को हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया था 4 न्यूटन का। तो द s1 यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है वो 16 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। Okay, let us see the second part of this question. Now the distance covered in second case. Second case क्या हो रहा था वहां पे, फिर उसने और उस पे फोर्स अप्लाई किया। सो द सेकंड केस इज, फर्स्ट केस में क्या हम लोगों को वेलोसिटी मिल गई 8 मीटर पर सेकंड की, एंड द टाइम नेक्स्ट टाइम उस पे 6 सेकंड का फोर्स है, 6 सेकंड तक फोर्स को अप्लाई किया गया। So the distance traveled in the second case is 48 meter. Now the total distance traveled by the body is s1 plus s2, दोनों distances को हम लोग add करेंगे, that is 64 meter. 16 plus 48 we will get 64 meter. Thus the distance traveled by the body after 10 second is 64 meter, ठीक है। वो बॉडी जो है, अगर हम लोगों ने पहले में हम लोगों ने 4 सेकंड का फोर्स अप्लाई, 4 सेकंड तक 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था, और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स में हम लोगों ने बॉडी को कितना डिस्टेंस कवर कराया बाय अप्लाइंग 4 न्यूटन फोर्स, दैट इज 64 मीटर।